इंडियंस खुद वो सवाल वही पूछ रहे हैं और दे आर क्वेश्चनिंग many things. So this is how, you know, their narrative has virtually gone for the six, and their propaganda has fallen. So हम अभी भी हमारी जो ऑफ़र है वो है, जहाँ तक आपने ममालिक की जिक्र किया, मीडिएशन की बात की. देखिए मीडिएशन नहीं, इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, मीडिएशन तो कोई ज़रूरत नहीं है. So our friends have offered, and they must be trying. The need of the hour is, because both countries being nuclear, need of the hour is any escalatory move can go to a direction which would be unsustainable, not between the two countries, maybe for the entire region. So it is a combined responsibility of friends and the regional actors to make sure that India doesn't make this mistake. But as General Sharif has said, on behalf of armed forces, they are alert, they are ready, and they are, inshallah, in a position to give a befitting response of the nature, and we will choose time and mode, of our liking. Thank you. I'll just try to add to that आपने कहा information आती है कि जहाज़ ये हो गया, मुख्तलिफ तरह information. अगर तो आप अपनी information social media से ले रहे हैं तो आपको बहुत तरह की information मिलेगी. तो I would request that please only refer to the credible sources of information. Especially ये जो circumstances चल रहे हैं इसके अंदर, the social media, the accounts, they are not a credible source of information. वहाँ से आपको बहुत कुछ मिलेगा. अपने दावे की बात की, वो दावा कहते हैं कि जी हमारा राफेल और ये वो, तो उनके दावे तो पहलगाम पे भी हैं, उनके दावे तो बहुत सी चीज़ों पे हैं. उनके अगर हम उनके दावों पे चलना शुरू हो जाएं तो then the world will look entirely different. And lastly, जो आपने DGMO की टॉक की बात की, there is a long standing arrangement of routine होती है, DGMO एक hotline established है और वो हर ट्यूसडे को उसके ऊपर एक बातचीत होती है. इसके अंदर जो सा है, दोनों साइड्स की प्रोटोकॉल यही है कि वो इस बातचीत को, इस कॉन्टैक्ट को पब्लिक नहीं करते. वी डोंट नो दैट फॉर व्हाट रीज़न द इंडियंस थॉट इट्स नेसेसरी कि उन्होंने आके इसको पब्लिक करना है. परहैप्स दे फेल्ट, जिस तरह उन्होंने कहा कि इन द नैरेटिव, इन द इंफॉर्मेशन डोमेन दे हैव नथिंग टू टेल, तो दे थॉट इट्स कि जी इसको अपनी पब्लिक को बताया जाए कि हमने वहाँ पे सीज़ फायर वायलेशंस की बात की है और हमने ये बात की है. So this is not something that is talked in public. So this is an arrangement, long-standing, between the two countries. जी, सदीक साजिद जी, एक न्यूज़ है. डॉक्टर साहब, अभी आपने हाल ही में काबुल का विज़िट किया और उसके फौरी बाद ये 71 जो डीजी साहब ने बताया कि टेररिस्ट अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, प्रॉक्सीज़ की बात की, तो क्या आपकी उनके साथ इस हवाले से जो बात हुई उसका नतीजा इस सूरत में निकला कि शुरू में क्या कहा आपने? काबुल विजिट किया. जी. वो तो फिर वही जारी, बल्कि सबसे बड़ी तश्कील जो है वो पाकिस्तान की सरजमीन पे आई. दूसरा डीजी साहब, आपसे एक सवाल है कि इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर हैं, मुसलसल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग, कैबिनेट मीटिंग, और उनका इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अपनी फ़ौज को ग्रीन सिग्नल दे दिया है पाकिस्तान के ऊपर हमले का, और ये कहा गया कि वो अपनी मर्ज़ी से जगह का तयन कर लें, मकाम का तयन कर लें, टारगेट का तयन कर लें. तो हमारी तरफ से जो आपका इसका रिस्पॉन्स क्या होगा? मैं काबुल का जवाब आपको पहले दे देता हूँ. देखिए, डोंट मिक्स टू थिंग्स टुगेदर. यू कैन नॉट चेंज योर नेबर्स एंड यू हैव टू डील विद देम. दिस इज़ नो सोल्यूशन कि अगर हमें पता है कि उनकी सरजमीन माजी में इस्तेमाल हुई है तो हम अपने ताल्लुकात को बंद कर दें. It is neither good for economy, nor trade, nor even Islamically, it's not allowed. So the government and the stakeholder decided that we should re-engage Afghanistan. So I visited Afghanistan. The visit was absolutely marvelous, both from political point of view, from economic and trade point of view, from refugees point of view. And also, वो नहीं करते, चौई साहब जनरली प्रेस टेक आउट नहीं करते, वो प्रेस रिलीज़ नहीं होती. इट इज़ अनयूजुअल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी अरेंजमेंट कि उन्होंने मेरे साथ खड़े होके, हमारे काउंटर पार्ट ने, वी शुड अप्रिशिएट. बजाय ये कि अगर हम ऐसी चीज़ों पे क्रिटिकल होंगे तो जो उसका पॉजिटिविटी है वो इंडिया तो भेजेगा उनको. देखे आपने तो बड़ा
پرائم منسٹر صاحب سے میری میٹنگ ہوئی, مجھے بتایا گیا وہ بہت تھوڑی میٹنگ کرتے ہیں. اٹ واز ایلیبوریٹ میٹنگ وتھ پرائم منسٹر خود. اس کے بعد ڈی پی ایم سے میٹنگ ہوئی, ان کی پوری کیبنٹ کے جتنے مین ونگز تھے وہ سارے تھے, اور پھر متقی صاحب سے میٹنگ ہوئی. تو میں تو اس کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں. ہمیں دیکھیں, ہم نے رہنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ, اور ہماری جو بہتری ہے ان کے لیے بہتری ہے, اور ان کی جو بہتری ہمارے لیے بہتری ہے. سو گورنمنٹ اینڈ دی اسٹیک ہولڈرس دے ڈیسائیڈڈ کہ وی شوڈ ری انگیج, اور اس کے نتیجے میں گیا, اور وزٹ واز ایبسولوٹلی فائن. اور میں نے یہاں آ کے آپ کو نہیں بتایا کہ وہاں میں کیا کہہ رہا ہوں. میرے بائیں ہاتھ متقی صاحب کھڑے تھے, اور میں ہر چیز جو کچھ ہم نے اناؤنس کیا, جو کچھ ایگری کیا, میں نے ٹرانسپیرنٹلی قوم کو اور دنیا کو بتا دیا, اور انہوں نے بھی اس کو اسی پیرائے میں لیا, اسی طرح رسپونڈ کیا. تو پہلے اگر ہم کابل کو اس میں ڈریگ ان کریں گے, آئی تھنک اٹ ول ناٹ بی فیئر. سو اٹ از ناٹ اے نیشنل انٹرسٹ. دیکھیے آپ, وی آر ناٹ کنسرن کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ ان کی اپنی کنزمپشن کے لیے جو کہہ رہے ہیں. ہم آپ کو بار بار یہ بتا رہے ہیں, ہم پہلے بھی کمیونیکیٹ کرتے رہے ہیں کہ ہم تیار ہیں, آزمانا نہیں. 2019 میں بھی ہم نے یہ بتایا تھا کہ وی آر ریڈی. وی آر ناٹ دی ون ہو آر گوئنگ ٹو انیشیٹ اینی اگریشن. وی آر اے ویری ریسپانسبل اسٹیٹ, اینڈ ویل آلویز فالو دی پاتھ آف ریزن اینڈ کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ. بٹ اف دے تھنک دیٹ اگریشن از دی پاتھ فارورڈ, تو آر میسج از اونلی دس: we are ready, don't test it. Thank you, sir. Jiang Chao, Xinhua News Agency. We have seen that in the past days, Deputy Prime Minister and Foreign Minister held a phone call with Chinese Foreign Minister Wang Yi. And according to a release from Chinese Foreign Ministry, China reaffirmed its support to Pakistan on counterterrorism and safeguarding its national interests and national authority and territory, and also support to carry out investigation on the incident in Pahalgam in a fair and objective way. So my question first to DGSPR, that one thing when in your presentation about the Chinese national who are being attacked on October the 6th, 2024, that a account on social media to show indicating that this account knows the attack ahead of the thing happen. So have you ever traced the background of this account, who are behind it, and are you planning to present these evidence after the investigation to your Chinese counterparts? This is my first question to DGSPR. So second question, that we have already seen yesterday that Indian authority has, especially its leadership, has released a lot of signal on solving